A maiden five-wicket haul, bowling alongside Irfan Pathan in inaugural interstate T20 tournament, which later got named as Syed Mushtaq Ali Tournament. This was just before the commencement of IPL. Wow, isn't that a record every bowler would be dreaming of achieving? Good morning, friends. I'm Sankalp Vohra, and with me, I have, as usual, Bhumit Majmudar and Bhavik Mehta, and we are back with yet another episode of Behind the Wickets, a podcast which is of the fans, by the fans, and for the fans. And today, we are proud to welcome Sankalp Vohra, a professional first-class cricketer who represented Baroda at various levels and has the record of claiming a maiden five-wicket haul in the interstate T20 tournament against Saurashtra. Let me extend this brief introduction by letting our viewers know that Sankalp Vohra, who has played alongside international players like Zaheer Khan, Munaf Patel, Ambati Raidu, to name a few, has 30 Ranji Trophy, or what they say, first-class matches to his name, 20 List A matches, and 4 T20 matches. So, Sankalp, welcome to Behind the Wickets, and tell us, how do you feel being on our podcast? Thank you. Thank you for welcoming me. Thank you for this great welcome. I'll be talking in mixed language. Okay. So That's fine. तो Be comfortable. yeah. So playing along with international player was always my dream. Reaching that level was something मुझे बहुत खुशी हुई कि I got opportunity to play along with players like Zaheer Khan, Irfan, Yusuf, and Munaf, Raidu, playing against players like Parthiv Patel, Ajit Agarkar, Wasim Jafar, this stalwarts जो डोमेस्टिक में सुबह आप देखोगे पेपर और उन्होंने 100 मारे होंगे. So bowling such batsmen, it wasn't easy. And when you have got bowlers like Zaheer Khan, Irfan, Munaf in the same dressing room, sharing their thoughts, sharing their ideas, learning from them, that was a big, it was my really good experience. So before we jump on to anything, this is one question I wanted to ask. Yeah. You've been the first bowler to take 5 wickets. Okay. Yeah. And then you are also the first guest on our podcast, which is a bigger achievement. See, honestly, till I know, very, very few people know that I've been having this record on my name. जो actually Syed Mushtaq Ali जब start हुआ, hardly anyone knew that this was Syed Mushtaq Ali first tournament, first trophy. एक साल के बाद again it was been started again. So first year जो हुआ hardly किसी को पता था. Right. But later we came to know and till what I know. Okay, as matches were been played different zone में same time पर ही till I know I am the first bowler और मुझे अब तक किसी ने उसमें question नहीं किया है. Even if Sankalp, you are absolutely right. You are the first bowler. But this tournament started as just interstate T20 tournaments. And this was before the IPL commenced. This is in 2006-07, what I'm talking about. Yeah. And later, from the next year, this tournament got a name, Syed Mushtaq Ali Trophy Tournament. Okay. This is how it goes. Yeah, I think it was 2006 to be precise. Post India's T20 triumph in the World Cup, it was renamed as Syed Mushtaq Ali in 2007, and 2008 was the year when IPL commenced. And then it really began the T20 era, which is now flourishing. Absolutely, yes. So Sankalp, since you are here with us and our viewers would be keen to
know your experience. We'll be starting with one of the questions that you started your career as a left-arm pace bowler, and you had some action issues that your coach thought you should correct it, and you were being sent to MRF Pace Academy, if at all I remember. Can you share some more light on that? MRF Pace Foundation is actually when I started my career, I was been sent by Baroda Cricket Association. That was when I was 15 years old. I had played under 16 and I had picked around 7-8 wickets in under 16 Vijay Merchant Trophy. That is where 3 of the bowlers from BCA have been sent to MRF. वहां पहुंचने के बाद we came to know that from all over India there were around 120 candidates were there, जिनका उसमें से they were going to shortlist around 5 to 10 bowlers, and I was the youngest bowler, which I came to know later part. The action issue which I had was during when I started playing for Ranji Trophy. That issue was regarding what do you say in cricketing terms. If I say I had this issue of hyperextension elbow. Okay, so if you remember, same problem was having with Shoaib Akhtar. Okay, so ये था कि what was the problem actually कि आगे के कैमरा से मेरा एक्शन क्लीन दिखता था. ओके, फ्रॉम पीछे के कैमरा से मेरा एक्शन क्लीन दिखता था, बट व्हेन साइड में कैमरा रखते थे तो सेम टाइम पर जब मैं बॉल रिलीज करता था तो मेरा एल्बो थोड़ा बाहर के साइड है, मेरा ये एक्सटेंशन है थोड़ा ज्यादा, उसकी वजह से मेरा हाथ ऐसा लग रहा था दैट आई एम बेंडिंग माय एल्बो. उसके लिए आई वाज बीन सेंट टू NCA, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, but there I was not been given any green signal. They asked me that you will have to work on your action, जिसमें मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हुआ. But then again I worked on my action and I came back and I played and I picked up wickets again. So how difficult is it for a bowler to change his action after having played so much? See, it's I mean, it depends upon you honestly, but after bowling this much, I mean, every day you are bowling, so certain muscles get used to. Right. And after when you have been asked to change your action, तो उसमें इंजरीज होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, विच आई रियली मीन्स लेटर स्टेज में मुझे हुई भी. तो okay, fine, that is a process you need to go through because my action was looking doubtful at times. पर तब वो रूल एक्चुअली ये रूल क्लियर नहीं था कि जिसका हाइपर एक्सटेंशन होता है उसको वो जितना डिग्री होता है वो एड ऑन होता है. इफ यू नो दैट 15 डिग्री इज ऑफिशियल जो होता है ICC रूल्स में. बट इफ माई विथ माई हाइपर एक्सटेंशन इफ इट्स थोड़ा ये ज्यादा होता है, इफ इट कम्स टू 18 to 20 डिग्री, तो फॉर हाइपर एक्सटेंशन बॉलर्स वो काउंट होता है. तो रूल तब तक क्लियर नहीं था, वो बाद में क्लियर हुआ, ऐसा था. I always keep on wondering how do these people measure the degrees with the protector when the bowler is bowling. I mean, it's actually a very fantasizing question that I always think of. How do they actually measure the bowling degrees? Yeah, and think about those times when at international level also, as Sankalp, you're rightly saying, international level also there was a lot of ambiguity over the rule. And you had umpires in Australia calling Muralidharan off and Randunga taking the entire team off. You had all sorts of situation across international cricket at that time for bowling action.
At that time, rules were not clear, and then I don't know how, but उन्होंने कुछ रूल्स बनाए अभी, दैट इज आईसीसी के ऊपर है पूरा. बट अभी अभी एज ए व्हेन आई एम इनटू कोचिंग नाउ, आई हैव टू कीप, मुझे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि इन केस अगर हमारा कोई बॉलर इफ ही इज बीन फाउंड विथ इलीगल एक्शन, तो पहले तो कोच को एक वार्निंग मिलती है. ओके. Oh, okay. आफ्टर दैट if that same bowler is found again, if he is not clean with his action, तो कोच को रिमूव करने में आता है. That is what I know. Okay. Oh God. Okay. So that brings another question to my mind. So it's been almost now 7-8 years since you are into coaching officially. Yeah, I finished. I'll be finishing 10 years now. 10 years, right? So Wow. it's been a decade. about 10-15 years of playing at state level, representing your state. And before the advancement of T20, as we were talking earlier, playing in those times versus playing in the times when T20 is the flavor of cricket, you can say, and you're struggling to, I mean, people everywhere, broadcaster to host countries and ICC, everybody is grappling with thoughts of how to continue Test cricket forward. Yes. When you have been there as a player in those times, and when you've been there as a coach in these times, how do you see cricket has changed at domestic circuit? Cricket is changing, I mean, with rapid speed. I mean, as a coach, मुझे बहुत अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है, because every now and then हमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है ऑन स्क्रीन. so हम लोग एक थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जा सकते कि इसके आगे अभी क्या होगा. I mean, क्रिकेट में कुछ भी नया हो सकता है, because we never thought के McCullum will become England Test cricket coach, and you are getting to see the results right now. They are scoring 400 runs, 400 plus runs in a day. Yeah. So they are playing totally different kind of cricket. When we used to play, we have been told that if being opener, if you are facing a new ball, you have to see that first half an hour, first 45 minutes, you have to see के बॉल की शाइन चली जाए, यू हैव टू आउटसाइड ऑफ स्टंप के बॉल को छोड़ना है. बट यहाँ पे टोटली यू विल गेट टू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट के जहाँ पे अगर बैट्समैन को पहला बॉल हाफ वॉली मिला है तो ही विल गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, वेदर ही इज फेसिंग हिज फर्स्ट बॉल और इज स्कोरिंग, आई मीन ही इज प्लेइंग ऑन 50 runs or 100 runs. So it's all about approach, I feel. What is your mindset when you go inside the ground? And that is what I keep on telling my students. I mean, you need to be very positive now. If you see in Test cricket, you will hardly see any draw Test matches. You will surely get the results. अभी cricket थोड़ा fast हो गया. You need to score runs rather than keep on staying on wicket. हम आज की तारीख में अगर पुजारा को देखते हैं तो वी फील के यार पुजारा इज समवन, सबसे अलग दिखता है यार, कब करेगा रन. बट ऑनेस्टली यू नीड एटलीस्ट one player in team like Pujara who can keep team together. I mean, अगर जब विकेट्स गिर रही होती है तब पुजारा जैसा ही कोई दिमाग में आता है कि यार एक पुजारा तो होना चाहिए टीम में. तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऐसा है. अभी आपका थिंकिंग कैसा है उसके ऊपर है पूरा. बट ये यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस भी होते होंगे ना. अभी की जो मैचेस होती है वो सूर्य कुमार यादव को देख के भी इन्फ्लुएंस होते होंगे और डिविलियर्स को देख के भी इन्फ्लुएंस होते होंगे. इन्फ्लुएंस मैं बोलूंगा अभी किसी को, आई मीन कोई यंगस्टर्स को आप बोलोगे कि आपको बड़े होके क्या खेलना है, तो हमारे टाइम पे सब लोग बोलते थे कि वी वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. ओके, दैट वाज अ टाइम. अभी आज के टाइम में सबका थिंकिंग ऐसा है कि वी वांट टू प्ले आईपीएल. इट्स नॉट दे वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, दे वांट टू प्ले आईपीएल.
और मेजोरिटी प्लेयर्स विल बी सेइंग दैट आई वांट टू प्ले फॉर मुंबई इंडियंस। अभी Yeah. वो उनको पता नहीं क्या क्रेज है मुंबई इंडियंस का, पर यंगस्टर्स में यस यू विल गेट टू सी दिस के यस आई वांट टू प्ले आईपीएल एंड आई वांट टू प्ले अ सर्टेन टीम दैट इज मुंबई इंडियंस ओनली। ऐसा होता है। So, Great, Sankalp. yeah, carry on. Yeah, so I'm moving back to another question. I would say, see, you mentioned that Brandon McCullum has become a coach of England Test cricket. On the flip side, Rahul Dravid has become a coach of our T20 cricket. See, these were two totally opposite cricketers, and they are coaching a totally opposite format of the national side. So, how do you think? I mean, the coach as a player had a different mindset when he was playing. Now, how would that mindset change when you're getting into a different format altogether? Because Rahul Dravid, as I know, has been a very steady batsman, as you mentioned, leaving the balls outside the off stump and frustrating all the bowlers around the globe. When it comes to T20 cricket, what would he be telling his batsmen? Go for the first ball, throw it out of the stadium. How would Dravid be coaching his players? Uh, I'm not fortunate enough to, got time to, spend time with Rahul sir, but I'm sure जो आज की तारीख में कर रहे हैं, उनके थिंकिंग के हिसाब से इज वुड बी ऑलवेज, उनका जो थिंकिंग है उसके हिसाब से वो सब करेक्ट ही कर रहे होंगे। पर एज ए स्पेक्टेटर, एज ए Fan. फैन, हम लोग जब मैच देखते हैं तो वी हैव दिस सर्टन थिंग्स, हमारा इतना क्रिकेट खेले हुए हैं हम लोग सब, तो थोड़ा आ जाता है कि अरे यार ये गलत किया, अरे यार वो गलत किया, ऐसे करके वी कीप ऑन पॉइंटिंग दोस पॉइंट। पर वो कब होता है जब हम वो मैच खत्म हो जाती है ना, उसके बाद रियलाइज करते हैं। तो दैट इज वेरी इजी फॉर एनीवन टू टेक आउट दोस पॉइंट्स के यहाँ पे गलती की, ओके यहाँ पे ये कर सकते थे इसकी जगह पे। बट व्हेन यू आर इन द मिडल, इट्स वेरी वेरी टफ फॉर एनी ऑफ द, आई वुड से नॉट फॉर द कोच, also for the captain or also for the team, overall team, to take such decision, क्योंकि वो डिसीजन ले लेते हैं पर वो इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट दैट इजी। आई मीन वी आर नॉट प्लेइंग एट, आई मीन ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम कहीं कोई इंटर स्कूल की टीम के सामने खेल रही है, सामने की टीम भी ऐसा ही खेल रही है। ओके तो ओके मिस्टेक्स होंगी, बट देन वो जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन कितने सही है कितने गलत है, वो तो हमको मैच का जो रिजल्ट आता है या उसके बाद ही पता चलता है। जिससे मुझे एक और सवाल हो रहा है, आई मीन व्हेन यू से, जैसे हम लोग नेचुरली रिएक्ट कर देते हैं, हम लोग तो फिर भी ठीक है, वी आर प्योरली फैंस, यू आर समबडी हु हैज प्लेड एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल, तो इसीलिए आप ये जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो प्लेयर को समझ में आते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब ग्रुप में, आपके कोई फ्रेंड्स के ग्रुप में, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में, जब लोग लैम्बाशिंग करते होते हैं प्लेयर्स को, यार इसको ड्रॉप कर दो, 2 मैच में नहीं खेला इसको ड्रॉप कर दो, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती है उस वक्त? आप रिएक्ट नहीं करते हो मुझे पता है, बट आपको क्या Bhavik as लगता a है? favorite player. Bhavik as a favorite player. हाँ, जैसे KL मैं Rahul. बहुत इसके राहुल बारे के में हम पीछे 3 पड़ा रहता एपिसोड हूँ, से बात कर रहे हैं। जैसे मैं राहुल के पीछे बहुत पड़ा रहता हूँ, बट मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये भी बोलूंगा कि मैं 2 मैच के बाद पीछे नहीं पड़ जाता, मैं 10-12 मैच देता हूँ, उसके बाद मैं पीछे पड़ जाता हूँ, फिर नहीं रहा जाता कि भैया क्यों उसको खिला रहे हो। तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर इंटरनली? आप रिएक्ट फिजिकली तो नहीं, ऐसा तो नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो उसके ऊपर, बट कैसा लगता है?
See, I mean, as they what I have seen, and what I have learned from actually, I follow Dhoni very much. Okay. After that, I would say also, आप राहुल द्रविड़ को देख लो. Okay, as a coach you need to be very patient. Okay, you should be having very patient. आप अगर हर चीज पे रिएक्ट करोगे, कैमरा ऑल द टाइम आपके ऊपर होता है when you are playing international cricket. तो आप अगर कुछ भी रिएक्ट करते रहोगे ना, it doesn't look good. के good at the same time, it shows के you are not confident enough. Also के आप अगर छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते रहोगे, आई मीन उनके ऊपर के छोटे बच्चे ऐसे करके एज ए कोच, तो इवन इवन प्लेयर्स वोंट फील दैट कॉन्फिडेंस. ओके, एक तो ऑलरेडी उनके स्कोर्स नहीं हो रहे, ऊपर से हम उन पे चिल्ला रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं. ओके, ऑलरेडी इतना मीडिया का प्रेशर तो ऑलरेडी होता है. तो वो टाइम पे यू नीड टू बैक योर प्लेयर, यू नीड टू टॉक वेरी पॉजिटिव थिंग्स टू, जिससे उसको कॉन्फिडेंस मिले. ओके, क्योंकि द रीजन व्हाई ही इज इन द टीम, ही इज इन द स्क्वाड, और फॉर दैट मैटर कोई भी अगर कोई टीम इंडियन टीम में आया है तो इज देयर बिकॉज ही हैज अर्नड हिज प्लेस. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे भी चल के आ जाता है. ओके, they have done certain, I mean, they have scored some runs in domestic arena, and that talent is really good. ऐसा भी नहीं है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले रन्स नहीं किए. ओके, so as a coach, as a captain, you need to back your players. जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कर रहे हैं ऑनेस्टली अभी, which is really good sign. क्योंकि आप एक अच्छे टैलेंट को, नो डाउट काफी इनिंग्स हो गई, उनके रन्स नहीं हो रहे, बट हम एक तरीके से देखें तो आप मुझे दिखा दो कि इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमारे कितने बैट्समैन ने रन्स किए टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो. Absolutely, yes. हमारा कोई बैट्समैन, आई डोंट सी वी आर प्लेइंग विद दैट कंसिस्टेंट फॉर्म. अगर कोई कर रहा है तो उसको फिर ब्रेक मिल जाता है, लाइक गिल वाज डूइंग. सो नाउ ही इज अगेन सिटिंग ऑन बेंच. उसका जो अच्छा टाइम चल रहा था, अगेन उसको फिर खिला कौन सी विकेट पे रहे, जहाँ पे हमारी 3-3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रही है, 2-2.5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रही है. तो ओके फाइन, वो लोग का थिंकिंग है, पर या एज ए कोच एंड कैप्टन यू नीड टू बैक योर प्लेयर्स, विच आई ऑल्सो फील के दे आर डूइंग राइट थिंग. हाँ, बट हम लोगों के ऊपर गुस्सा आता है आपको कभी कभी, यार ये आपको समझ नहीं है क्रिकेट का, और क्या आई मीन सी एट टाइम्स वो रिएक्ट हो जाता है, पर क्या कर बोलते हैं ना, आई मीन एवरीवन हैज गॉट देयर ओन थिंकिंग, Opinion, ओके, thinking, ओपिनियन, yeah. थिंकिंग, या आई मीन आप और इंडिया में कैसा है, आप कहीं पे भी होंगे, क्रिकेट सब खेले हुए हैं, वेदर इट्स ऑन प्लास्टिक बॉल या टेनिस बॉल. So everyone feels के उनके हिसाब से होना चाहिए था. और what I have gone through के क्रिकेट में जो भी कोई भी अपना ओपिनियन देता है ना, कोई भी गलत नहीं होता उसमें. everyone is their thinking, ओके. पर वो थिंकिंग के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं, दैट इज दी. बिकॉज इफ आई कंपेयर रवि शास्त्री एंड राहुल द्रविड़, ओके, तो एक टाइम हम लोग व्हेन वी वर प्लेइंग एट ऑस्ट्रेलिया, आई नेवर थॉट कि 5 नंबर पे ऋषभ पंत आएगा, जब हमारी 4 विकेट जल्दी गिर गई थी, 3 विकेट जल्दी गिर गई थी. एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन वी वर चेजिंग 300 प्लस, ओके, दैट टू इन 4th inning. And he was been asked ke we are not playing for draw here, we are going for Yes, we are going yes, to win there. yes, correct. So that was his thought process, okay. True. और यहाँ पे हमारा thought process थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि we are on playing on a safer side. Safer side I won't say, पर अभी with this 2 matches, I mean when we have already won 2 matches, okay, ऑस्ट्रेलिया के सामने, I guess करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमको अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट
फाइनल में आना होता तो उसके लिए वी हैव टू विन बाय टू के मार्जिन से जीतना है, ऐसा कुछ है ना? नहीं, बेसिकली ये है कि काफी हम complicated अगर There are टू many टू complicated scenarios. Yeah. मतलब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2-2 में आपको श्रीलंका और न्यूजीलैंड सीरीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा हमको। या Right. और अगर हम उस सीरीज को 3-1 से भी जीत जाते हैं या 3-0 से, देन वी आर थ्रू सिक्योर्डली। फिर हम वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। even if we win by 2-0 we are secured, I guess. Yeah, Yeah, yes. Yeah. But Yeah. then So we have- 2-0, what you're talking is 2 tests will go draw. जो possibility नहीं है इंडिया में, especially with See- the pitches that we are getting on offer, right? No, that is what I'm saying. I mean, till what I know, Indore pitch was never like this. Okay, Indore wicket is a totally flat bully wicket. Okay, जहाँ Yes, पे there have been 2 test matches over here which are played earlier, and both the test matches have a double 100 scored. exactly that is what I am saying. So when you are already 2-0 ahead in the series, and when your batsmen are struggling, what for you want to play on a ranked turner wicket? Okay, Actually, and yes. if you analyze previous two test matches, if I say Australia is learning from their mistake, okay. With every session they are learning, with every session they are improving, I would say. It's just that Firozshah Kotla, one session they played totally bad cricket, that is where they lost the match, okay. Or else I would say in Firozshah Kotla also, in Delhi test match, they were having upper hand. If they would have batted well in second inning, they were having upper hand. But we are making our batsmen are making same mistake again and again, and we are not learning from our mistake. I felt that after when you are 2-0 ahead, just give your batsman confidence, na. Why you need to play on a ranked turner? विकेट ही ऐसी बनाओ कि 700-800 रन होंगे, बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खेलो 5 दिन तक। Exactly. पर यहाँ पे क्या हो जाता है, if you talk to any of the international player या इंडियन प्लेयर, उनको वो I won't say ego, but किसी को भी हराने में मजा आता है तो सबको होता है कि ऑस्ट्रेलिया को हराने में मजा आता है। उनको ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना है, उनका ये होता है टारगेट कि अगर पूरी सीरीज है तो आई वांट टू व्हाइट वॉश करना है ऑस्ट्रेलिया को, विच ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ इजी साइड। ओके, आप उसको व्हाइट वॉश नहीं कर सकते, बट देन यू शुड हैव प्लेड स्मार्टली, दैट इज व्हाट आई फील। आपके बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस आ जाता, दे वुड ऑल्सो फील के हमारे रन हो रहे हैं, और आपको अगर रिजल्ट लाना ही था मैच का तो आई वुड से they should have played on green wicket according to me, because they have got only Stark right now who has just come back from the injury. Okay, Boland is there, Cummins, Hazelwood, both are missing. Okay, if I see, we have got a better pace attack right now if we compare them 1-1. खाली स्टार्क को साइड में रख दो, स्टार्क इज रियली गुड बॉलर, but if we see our Shami, okay, unfortunately he couldn't play this match, पर उमेश, हमारा वो दूसरा कौन, धीराज हो गया, उन्नटकट is sitting outside. It would have been really good option if we would have played on green wicket. 1